This is my second video on the chapter Globalization and the Indian Economy. In my first video, we have read about what is globalization and what are MNCs, multinational corporations. Where do they set up their offices and factories? The only thing in their mind is how to maximize their profit. And for maximizing profit, they search that area where the cost of production can be reduced. So, what are those factors on which they decide where they have to set up their factories and offices for production? Let's begin today. Two topics we are going to take today: interlinking production across countries and foreign trade and integration of markets. So interlinking production across countries. MNCs set up factories and offices where they get availability of skilled and unskilled labor at low cost. देखो बेटा, याद रखिए कि जो रॉ मटेरियल है वो तो जितने का आएगा उतने का ही आएगा. वहां पर आप उसकी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ रिड्यूस हो सकती है? जहां पर हमको लेबर सस्ती मिल जाए. अगर वही काम ये अमेरिका में करते हैं, इफ इट इज अ अमेरिकन एमएनसी, तो वहां पर लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव. उनको वहां पर उसी काम को करने के लिए अपने इंजीनियर को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. जबकि इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां डेंस पॉपुलेशन है, वही काम वो 1/3 पेमेंट में भी करा लेते हैं. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखने का उनके पास एक ही दिमाग में उनके पास एक फैक्टर है कि वेयर दे विल गेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट्स. उस जगह को वो पहले ढूंढते हैं. नंबर 2, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एश्योर्ड. अदर फैक्टर्स मीन्स, are they getting electricity, water supply, market close by and all other benefits of big cities? इनको भी वो assured करते हैं. All other factors are available in the nearby areas. Favorable government policies. गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके फेवर में है कि नहीं? फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं? When they get on subsidized rates, electricity, water, their tax को भी रिड्यूस कर दिया जाता है इनके लिए to attract these MNCs in our country. तो गवर्नमेंट बहुत तरीके से इनको अश्योर करती है कि हम आपको बहुत ही लेस कॉस्ट में बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी फेवरेबल है, स्किल्ड लेबर मिल रही है, अनस्किल्ड लेबर मिल रही है एट लो कॉस्ट, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, देन दे डिसाइड यस दिस इज द राइट प्लेस फॉर द सेटिंग अप ऑफ देयर फैक्ट्री और ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन. जब ये तीनों उनको मिल जाते हैं, हैविंग एश्योरेंस इन देयर माइंड, या दिस इज द प्लेस वेयर दे आर गोइंग टू सेट अप अ बिग इंडस्ट्री, नाउ दे इन्वेस्ट मनी इन दैट एरिया. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सिंपल इन्वेस्टमेंट. आप जानते हैं हम लोग भी अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बैंक में रखते हैं. कभी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं लैंड खरीदते हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर में ये हमें ज़्यादा पैसा देगी. दिस इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज व्हेन वी इन्वेस्ट मनी फॉर बेटर रिटर्न्स. सो इन्वेस्टमेंट की पहले डेफिनेशन बोलेंगे, द मनी स्पेंट टू बाय एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इसी सोचकर किया जाता है कि आगे फ्यूचर में इट विल गिव अस हाई रिटर्न्स. नाउ व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज सेम, बट इट इज डन बाय अ फॉरेन कंपनी. इट इज डन बाय अ MNC. इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs to buy assets like land, building, machines is called foreign investment. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट यही है, व्हेन द मनी इज इन्वेस्टेड
to buy assets like land, building, tools, property, etc. is investment. And when this investment is done by a MNC, it is called foreign investment. Okay. Now, हमने देख लिया कि MNCs ने साइट चूज कर ली है, उसको सारे फैक्टर्स अच्छे मिल गए हैं और इस तरीके से वो वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है. Now, what are the different ways by which MNCs set up and control production in different countries? अब कंट्री तो उसने डिसाइड कर ली, कंट्री में उसने जगह भी डिसाइड कर ली. Now, what are the different ways by which it expands its production? वो किस तरह से अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है? So there are 3 methods by which MNCs setups, controls, owns production in different countries. What are these 3 methods? Let's discuss. By setting up partnership with local companies. There are some local companies in the country which are not making good profit. वो बस चल रही हैं, they are not growing, they are not able to increase their production. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को ये क्या करते हैं, पार्टनरशिप के लिए बोलते हैं. लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू प्रोडक्शन, एमएनसी बोलती है. तो लोकल कंपनी भी सोचती है, व्हाट बेनिफिट्स आई विल गेट इफ आई विल जॉइन हैंड्स विद एमएनसीज. दे गेट ट्विन बेनिफिट्स. Who? The local companies. Local companies are ready to join hands with these big MNCs because they are getting twin benefits. What are these twin benefits? Number 1, they get additional investment for buying up new machines, for upgrading their old machines, for making a good infrastructure. अब इनसे पैसा मिलेगा, we will work on our machines and infrastructure, etc. Number 2, which is very important, MNCs come with latest technology along with them. MNCs are American MNCs are from Germany, MNCs are from Japan. These big countries, when the companies of these countries enter into a country, they come with latest technology. So because of these 2 benefits, local companies, they are readily join hands with MNCs. So this is the first method how the MNCs enter into a country and starts its production. Number 2, buying up local companies. This is the most common route by which MNCs expand production. First route था by joining hands और setting up partnership. दूसरा मेथड होता है buying up. Buying up means अगर कोई हमारी इंडियन इंडस्ट्री है which is a sick industry. सिक इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है, जो कितना भी इन्वेस्टमेंट करके दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. तो ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ, स्पेशली सिक इंडस्ट्रीज के साथ, दे बाय अप दोज इंडस्ट्रीज एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन. हाउ? बिकॉज दे हैव इन्वेस्टमेंट फॉर बाइंग अप दिस बिग लोकल कंपनी. They have latest technology, and you don't know, beta, MNCs with their huge wealth, इनके पास इतना पैसा होता है कि sometimes it is more than the entire budget of a developing country. So you can think of their tremendous power. इतना पैसा है कि they buy up local companies and then they expand production. So there is one example in NCERT book, Cargill Foods. Cargill Foods is a American MNC. वो यहाँ पर देखती है कोई food industry which is not doing so well,
उसने देखा एक पारक फूड्स करके इंडस्ट्री है, उसका नाम काफ़ी है लेकिन वो अभी उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है. They bought that industry and started production. और प्रोडक्शन वो कैसे अच्छा कर लेते हैं, उसका वो कॉस्ट भी कम रखते हैं क्योंकि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दे आर गेटिंग लेबर एट वेरी लो कॉस्ट, सो दे कैन कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो. उस हिसाब से वो उसकी रेट भी कम रख सकते हैं. और क्वालिटी वाइज दे आर सो गुड दैट दे आर easily accepted in a country. Third method by which MNCs expand production is placing orders to distant small producers. अब MNC अपने देश से नहीं आती. इन दोनों मेथड्स में MNC उस कंट्री में आ रही है जहां ये फैक्टर्स उसे मिल रहे हैं. In this third method, MNC is not moving from its native country. अमेरिका में बैठी हुई है और अमेरिका से ही it is placing orders to different and distant small producers around the world. जहां जहां उसे चीप और स्किल्ड लेबर मिल रही है, बाकी दो फैक्टर उसे अभी नहीं चाहिए. जहां उसे चीप और स्किल्ड लेबर मिल रही है वहां पर वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करती है, पर्टिकुलरली इन गारमेंट्स, फुटवेयर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स. द पीपल सिटिंग millions of kilometers far, they are making products for the MNCs. The MNCs with their tremendous wealth can very easily determine price, quality and labor conditions of these distant workers. वहाँ बैठे बैठे वो सारी क्वालिटी ऑफ द वर्क चेक कर लेती है, लेबर कंडीशन चेक कर लेती है, प्राइस डिसाइड कर लेती है. Made by these small producers in their distant areas, these products are again sent back to the MNC, to the native industry. Again, all the products which are made by these producers, small producers, will go back to America. For example, they will be tagged. उनके ऊपर एक टैग लगाया जाएगा, made in America. And under their brand name, they are selling these goods across the world. तो आपने इस मेथड से देखा जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, goods are produced globally and goods are sold globally. यहाँ पर गुड्स कितनी जगह में बन रहा है और उसके बाद when they are again sent back to America, they give it their name, their brand, and then under their brand it is marketed across the world. Okay, so these are the three methods, three different ways by which MNCs set up and controls production in different countries. Here we will take an example of Ford Motors. It is an automobile industry. It has production units in 26 countries. You can imagine a Ford Motors, one automobile industry having its production units in 26 countries. And when they decided to set up their industry in India, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखकर दे फाउंड चेन्नई एज द आइडियल प्लेस फॉर सेटिंग अप देयर यूनिट. दे केम इन चेन्नई एंड हाउ मच मनी दे इन्वेस्टेड? 1700 crores in 1995. Such a big investment. And by the time in 2014, they are, the latest data available, they are manufacturing 77,000 cars for the Indian roads and 77,000 cars they are exporting to Africa, Mexico and Brazil. So with such a big investment,
how much profit they are making, and they have decided to make their Chennai plant as a base plant for supplying components across the world to other 26 countries. So it means it is very beneficial for them to have a plant in Chennai. That is why they have decided to make it a base plant which will supply the different components of automobile to different countries across the world. Okay, beta. Now our next topic is foreign trade and integration of markets. Foreign trade आपको मालूम है क्या होता है? ये कैसे markets को integrate करता है, जोड़ता है. You know that in history also, foreign trade has been the only method of connecting countries. Last video में बताया था, till 1970s and 80s it was only foodstuff, raw material and finished goods which moved across the countries, which moved across the borders. That was the only method by which different countries were integrated or connected. So in the history also we can see that the trade was the only method of connectivity. East India Company, British East India Company, why did it come to India? Only because of trading interest. Indian spices, Indian muslin cloth, Indian indigo, cotton, different type of raw material attracted them to come to India because they were getting cheap raw material. So from that time we can see that they were looking for the place from where they can get cheap raw material. And India, the location of India at the head of the Indian Ocean, had very good relationship with all East and West countries. So now we will see at present also that foreign trade, again it is the main method of integration of the countries. How foreign trade help in integration of markets? Number one, it provides opportunities for the producers to reach beyond domestic markets. Foreign trade का मतलब क्या है? If I find my good is very of good quality, मैं बहुत अच्छा produce करते हो and I can go beyond the domestic market. अपने देश में बेचने के बदले if I am getting more profit in another country, so foreign trade gives opportunity to the producer to sell their goods beyond domestic markets or beyond the market of their countries. Now the producer can sell their product not only within the country, but they can also compete in the markets of other countries. If they find their produce is of good quality, it can compete at the global level. So now the foreign trade has given them opportunity to sell their produce not only in their country, but also they can compete in markets of other countries. So when they go to other countries, this is how the countries are integrating and connecting. Foreign trade is helping to bring these countries closer. Now for the buyers, they get wide range of choice of goods. Choice of goods rises in the market. पहले जो अपने देश में प्रोड्यूस होता था वही खरीदने में हम मजबूर होते थे. There was no choice. बस जो इंडिया का प्रोडक्ट है वही खरीदिए. But now due to integration of markets, and integration of markets is due to foreign trade. The buyers, the consumers, we have wide range of goods at a reasonable price in the market. हम एक चीज़ खरीदने जाते हैं, हमारे पास वहाँ पर कितने सारी ब्रांड्स की वो चीज़ होती हैं और हम उसे देखते हैं जो हमको सूट करता है, हमारे पॉकेट को सूट करता है, हमें उसके फीचर्स जो चाहिए वो मिल रहा है, हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट वी आर गेटिंग ऑफ this integration of markets, that a wide range of choice of goods in the market. Prices of similar goods in the two markets become equal. अगर वही good
इंडिया में है या वही न्यूयॉर्क में, कनाडा में, शंघाई में, टोक्यो में, हर जगह पर उस ब्रांड का जो प्राइस होगा इट बिकम्स इक्वल। अगर एक मोबाइल कहीं लॉन्च करती है कोई कंपनी, तो वो प्राइस हर कंट्री में सेम होगा। कोई कार लॉन्च होती है, वो कार की प्राइस हर कंट्री में दे टेंड टू बिकम इक्वल। यहाँ पर मैं एक वर्ड एंटर कर दूंगी, इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। टेंड टू बिकम इक्वल मीन्स दे ट्राई टू बिकम इक्वल। Producers in different countries can compete against each other though they are miles apart. सब अपने अपने देश में बैठे हैं, लेकिन सेम प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ प्रोड्यूसर है वो compete कर रहा है जापानीज टेक्नोलॉजी से, चाइनीज टेक्नोलॉजी से, इंडियन टेक्नोलॉजी से, एंड दे आर सिटिंग in their own countries, but they can compete with each other, though in kilometers, in miles, they are quite far away. So these 5 points we have to write for this answer. This is very important question. Many times it has been asked in the board exam, how foreign trade help in integration of markets. Okay children, let us understand the effect of foreign trade through an example of Chinese toys. जैसे अभी हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा था, हाउ इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन, इट गिव्स वैरायटी ऑफ चॉइस टू द कंज्यूमर्स। नाउ चाइनीज टॉयज का एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। चाइनीज टॉय मेकर्स फाउंड एन अपॉर्चुनिटी दैट इन इंडिया टॉयज आर वेरी एक्सपेंसिव, so they thought of exporting Chinese toys. Chinese toys were plastic made and they were very light in weight, they were very cheap price, and new designs attracted the people. The people found a new variety of toys in the market. Within a year, 70 to 80% of Indian shops, they replaced Indian toys with Chinese toys. Here, what is happening here? As a result of trade, Indian consumers are getting wide range of toys, which earlier was not there. Indian toys were expensive. It was difficult for the consumers to buy those toys. So as the Chinese toys came, the wide variety of range of toys in the market, and what is happening here? Due to trade only, Indian consumers are getting wide range of toys which are cheaper, which have new designs, and which are very light in weight. So now what is happening in the Indian market? There is a competition between the Chinese toys and the Indian toys. And in this competition, the Indian toys are not preferred by the people. Chinese toys were proved better than the Indian toys. And in this competition, who is benefited? The Chinese toys makers, they are benefited. But on the other hand, the Indian toy makers faced losses. So in globalization, only those products will be accepted in the market which are proved better, quality wise also and price wise also, then only they are accepted. So we have seen with this example that how foreign trade helps in giving a wide range of choice of goods at a reasonable price to the consumers. Okay beta? So beta, we have read these two big topics here, interlinking production across countries, in which we have read what are the different ways by which MNCs owns and controls production in different countries. Okay, number 2, how foreign trade helps in integration of markets. Okay, thank you so much. Have a great day.